I don't know how to talk to them about sex. What should I tell them about sex? How much is too much? So all these messages are coming through and I'm actually confused. So today we're very lucky. We've got Ramya and Dipika from TARSHI. And they'll be guiding us on how to talk to kids, especially very young kids, about sexuality. What is the right age to talk to them? It is best that we start having this conversation as early as we can. So we would suggest that as soon as the baby is born, one can start thinking of what is a color. Are we like restricting our child for a particular pink or a blue or something like that? Are we trying to give a car to a boy and a doll to a girl? So these are messages that we are already defining. Are we trying to perpetuate? Like, are we trying to have a stereotypical kind of upbringing for the child? So it starts from that. So if we have had an open conversation right from very beginning, what happens is that it becomes easier as and when the child grows up also. So Ramya, I'll ask you, what's an open conversation to such a young kid? What do you mean when you say? Is it the tone that we use? Is it the words that we use? What is that open conversation to a child? It is everything. I mean, it's a tone we use. Are we giving any fear-based message? Are we going to attach their body parts to be something shameful? You know, so few things like, are we telling them the correct genital organ parts of the organs? Are we teaching them body positivity? So one is to start with whose body is it? I mean, whether the child is aware of the body and who it belongs to. So these are the things that in many ways that we tell the child at a very young age. फर्स्ट थिंग टू क्लैरिफाई, जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो दिमाग में ये आता है कि शायद हम सेक्स की बात करना चाहते हैं. इतने छोटे बच्चों से हम सेक्स की बात नहीं कर रहे हैं. सेक्स क्या है, कैसे करना है, ये इतने छोटे बच्चों से हम नहीं बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ वन थिंग दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी एंड व्हेन वी से दैट वी वांट टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी विद द यंगर वंस. और ये थोड़ा सा हमारे अंदर वो रहता है. सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. अगर छोटा 2 साल 3 साल का बच्चा है और उनके आदत होती है कभी पैंटी में हाथ डाल करके रखा हुआ है और हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है छी छी छी, शेम शेम. नाउ बोथ दीज वर्ड्स आर, वन इज लीडिंग टुवर्ड्स डिस्गस्ट, द अदर टुवर्ड्स शेम. नाउ दीज बॉडी पार्ट्स आर अ पार्ट ऑफ द बॉडी. They are an important part of the body which will be associated with pleasure later in life. और उनको हम शुरुआत से ही अगर छीछी और शेम शेम के साथ एसोसिएट करेंगे तो वो वहाँ पर वो मैसेजिंग गलत होनी शुरू हो जाती है. So what should we say at that point? Because that's a common situation. जी बिल्कुल बिल्कुल. और ये अक्सर होता है. तो मे बी डिस्ट्रैक्शन इज़ वन वे कि आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर दें. अगर वो बार बार हाथ लगा रहे हैं तो आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर दें. या सिंपल मैसेज है, अच्छा अभी तो हम डाइनिंग टेबल पे खाना लगाने जा रहे हैं, आप जाइए हैंड वॉश करके आइए. यू हैव टू वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट योर फूड. नाउ दैट इज़ अ वेरी सिंपल मैसेज वेयर वी हैव डन द जॉब, वी हैव आस्क्ड देम टू टेक देयर हैंड्स ऑफ एंड वी हैव ऑल्सो गिवन देम अ मैसेज कि आपको खाना खाने से पहले हाथ धोना है. तो उसमें शेम एसोसिएट नहीं किया जेनिटल्स के साथ. या शायद हम उनको इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ स्पेस, दिस इज़ अ पब्लिक स्पेस. यहाँ पर और लोग हैं, आप अगर चाहते हैं, कुछ इनकन्वीनियंस हो सकता है. हमारे दिमाग में ये है कि वो क्या कर रहे हैं, बट there might be some itching, there might be some sweating happening, or we don't know what's happening, and we can tell them that there are some things that you do in a private space. You want to go to the loo and check what's the issue, or do you want to talk to me about it, क्या हुआ है, rather than just suddenly saying chi chi shame shame and stopping them. Now another situation which always comes up is this kissing. Yes. No? I mean, we're kissing our kids all day long, but we don't want them to kiss anybody else. So what do you do? Because I mean, kids are going to nursery school. You know, somebody might kiss them, they might kiss somebody. What do you tell them about that? And especially adults kissing them. So as adults, we have to understand that some children might be particular about their private space. So it is a good idea to also ask them whether they are comfortable being hugged, being kissed. So sometimes we just assume that they can be allowed to be kissed by mama, chacha, and you know, anybody. So we need to also
make them ask them, and also have these conversations with the adults in our family who are interacting with them, that my child is not comfortable to be physically, close with somebody, so it's okay. I mean, let's not. They want to maintain that private space. So, but is a kiss okay at this age? Like, let's suppose, I know I've heard this happens at nursery school. 2 kids have kissed each other. Parents are in a fury. What do you do? it is, I think, our discomfort that comes in play, because for a child kissing another child, it's just an act of affection. It just comes so naturally. But it's I think the adults who think that this is something leading to a sexual act, or that is where the fear comes. The best would be to tell the child, whether you ask the other child that they were ready to get that kiss. If both of them are fine with it, I don't think we should have a problem in that. And what about inappropriate touch, this good touch, yes, bad touch, this whole discussion? This is very important, because when this kissing is happening, and if it is happening between children of similar age, yes, it is okay. They're exploring, they're just showing their affection to each other. They see on TV, they see elders, the adults around them, the concerned adults around them hugging and kissing each other, so they also enact the same thing. But it becomes a problem when this is happening between an adult and a young child, and that is what technically is called child sexual abuse की आप बात करने शुरू कर देते हैं, जिसको आप inappropriate touch कहते हैं. So to give a very clear message to the child that certain body parts are your private spaces, private parts, and no one else should touch them other than you or whoever the care provider is. It may be the mother, it may be the the care provider. If it is a child with disability, then there are other people who are the care providers who are handling the child. It's not only the mother, there might be other care providers. In that case, the child has to come back to we tell the child that come back to us, tell us if you are being touched. Certainly the child, there should be open communication, that if the child has experience something that is discomforting, अगर उनको नहीं अच्छा लग रहा है, तो एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन होना चाहिए कि वो जो भी ट्रस्टेड अडल्ट हैं, उनको आकर के बता सकें कि मुझे नहीं अच्छा लगा. पता चलता है वो डिस्कम्फर्ट पता लग जाएगा. उनको ये नहीं पता लगेगा कि ये सही था या गलत था. सही गलत बहुत ही वैल्यू लेडन वर्ड है. तो जब भी हम बात करते हैं, हम गुड टच बैड टच नहीं बोलते, हम सेफ टच अनसेफ टच बोलते हैं. तो अगर एक क्लियर मैसेज जा रहा है कि कोई भी नहीं टच करेगा, वो मामा या ये चाचा या ये दीदी या ये अंकल वो नहीं कह रहे हैं, हम एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि नहीं टच करेंगे. इवन अगर द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग, योर मदर विल बी स्टैंडिंग देयर, उनके सामने हम ये करेंगे. बता देना चाइल्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है, इज नॉट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन अडल्ट ख़त्म नहीं हो गया है. आपने ओनस चाइल्ड के ऊपर आप नहीं डाल सकते कि मैंने तो बता दिया था, इसने पलट के मुझे बताया ही नहीं, तो फिर अभी मैं क्या करूँ. We as adults, the child has the right to safety. उनको अधिकार है कि उनको सेफ्टी मिले, and we as adults are responsible that safety is ensured. So वो बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई बच्चे को उनसे बात कर रहे हैं, तो वो हम चैनल ओपन कर रहे हैं सिर्फ कि वो आके हमको जवाब दे सके. और दूसरा ये कि फिर भी हमारा जो विजिलेंस है वो बना हुआ है. हम जो बाकी के अडल्ट्स हैं उनसे भी कॉन्वर्सेशन ओपन रख रहे हैं कि हाँ, इस बच्चे को पता है कि अगर इसको कहीं भी कोई छुएगा तो उस बच्चे को पता है कि शायद कि वो ना कह सकते हैं. उन्हें पता है कि वो पलट के वापस आकर के मुझे या जो भी कंसर्न्ड अडल्ट है उन्हें बता सकते हैं. So what should I absolutely cover For the 2-year-olds? 2 to 4-year-olds. So it would be on gender roles, it could be on body positivity, it would be trying to tell them about the private and the public boundaries that they have. And what language should I use? How should I talk to them? It should not be fear-based. So we could have it in a more positive way, more fun way, something not attached to shame and guilt about their bodies. Talking very early, बहुत अगर जल्दी बात कर लो, तो does it make a difference? Like, is the child too exposed, or is the child like gets aware and confident? What we have seen, ये भी एक बहुत ही मिथ है कि अगर आप शुरू से बात करना शुरू कर देते हैं, तो फिर you are kind of giving a green signal to the child to have sex. That is what you say. But now there have been studies which have shown that if you have an open conversation, अगर आप पॉजिटिव वे में सेक्सुअलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन आ रहा है, then even the sexual debut is delayed. The children, they make more informed choices
एंड लेटर इन लाइफ, क्योंकि अभी तो हम 2 या 4 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो सेक्सुअल डेब्यू की कोई बात ही नहीं आ रही है. यहाँ पर हम उनके सेफ्टी की, उनके बॉडी की, बिकॉज दे आर जस्ट नोइंग अबाउट देयर बॉडी, वी आर एट दैट लेवल ओनली. बट इफ दिस कम्युनिकेशन, बिकॉज अगर शुरू से कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर हम सोचेंगे कि 14-15 ईयर पे अब चलो अभी शुरू करते हैं, तो तब तक हम तो वो दरवाज़ा बंद कर चुके हैं. सो दिस इज जस्ट ओपनिंग द डोर, एंड the studies have shown that it helps the children to make positive and informed decisions. And what if the child says something concerning to me? What should I do right then? Because we tend to panic. One is that hold yourself together. Do not panic. सबसे पहले तो वो करना है, do not panic, and to not panic आपको प्रिपरेशन पहले से करना होगा. उस एक मोमेंट में पैनिक नहीं करना है, इसके लिए मुझे पहले से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, इन्फॉर्म्ड रखना है. एंड ask the child, again we will say the same thing, क्या एज है, क्या कंसर्न आया है, इज द कंसर्न समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू देयर सेफ्टी, इज द कंसर्न समथिंग दैट वी फील कि ओ ये तो बहुत बड़ा इशू है और शायद वो उतना बड़ा इशू नहीं हो. तो एक कॉन्वर्सेशन करें उनके साथ, कॉन्वर्सेशन को और ओपन करें. एंड इट इज़ वेरी ओके टू से I don't know about this. It is very okay to say that I want to bring another concerned adult in this conversation. हमें शायद पापा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, या दादी को लेकर के आना पड़ेगा, इसमें उनसे बात करनी पड़ेगी. एंड अगर लगता है कि हाँ ये यहाँ पर हैंडल होने वाला मैटर नहीं है, then we can go to a professional, go to an expert also. But it is very okay to say that sorry, I don't know the answer to this, and I will get back to you. Just in closing, what are some tips for parents to start having these conversations with their kids? Let us have open and honest conversation from the very beginning, and create a space where they are able to come and talk to us. And talking about sexuality is not going to be easy for all of us. So let's prepare ourselves, maybe read about it, update ourselves, maybe rehearse also. So while we are also talking, we shouldn't be showing our own discomfort, because they are going to find it. If we are going to talk with a lot of discomfort, they are going to see, okay, abhi to ye khud, they're not very sure. So we need to be confident while we are talking about it. And not to wait for the child to come and ask a question, we will have to find the opportunities. Be ready to find opportunity to start a conversation on, because the child doesn't know कि अभी यहाँ पर ये conversation शुरू होता है. As an adult, we should use those opportunities. As I've said, be prepared, prepare yourself so that we do not panic. As an adult, what we were talking about कि we ourselves never got this training how to talk about sexuality. No one spoke with us, so we are also in the learning process. Learn, practice, and then whenever it comes, do not panic and have an open conversation and give age and stage appropriate information. जो जिस एज में ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 साल के बच्चे ने सवाल पूछा कि बच्चा ये पेट में कहाँ से आया, तो उसका हम उनको बायोलॉजी समझाना शुरू कर दें. इट इज़ ओके टू से कि वो मम्मी के पेट में है अभी कुछ दिन के लिए, फिर जब वो तैयार हो जाएगा तो फिर वो बाहर आ जाएगा. अच्छा ये कैसे होगा? दे में आस्क मोर क्वेश्चंस एंड वी मे थिंक कि अरे ये तो बहुत कुछ ज़्यादा हम बता रहे हैं. दिल फॉरगेट आफ्टर 5 minutes, दिल नॉट इवन केयर अबाउट इट. बट वी कैन ऑल्सो से कि आपको बताएंगे जब आप 7-8 years के हो जाओगे, जब आप 6th standard में चले जाओगे. बट whenever we are saying that we will tell you later, not to just brush it under the carpet, because they will remember and we should also remember to get back to them. That's the trick, I think. Thank you. Thank you.